Hello, hi, and welcome once again to The Week Today. It's a great pleasure to be back on this Wednesday evening at 10:30 from the heart of Manchester. And as usual, we will be discussing issues, some local, some national, and some international. What's been on the agenda this week is ID cards. The government made us a promise that it would not be compulsory, and suddenly the Blair government says, oh no, once you renew your passport, you'll have to sign a form which will make it compulsory. It went back into the Lords for the third time and it was rejected by the Lords again. Also, what's on the agenda is the issue with the Dutch, where their parliament last week indicated that there was an endeavour to ban the burqa, that's the veil, complete veil that Muslims wear, and there's only about 50 in the whole country. But in this week's parliament, I believe that there was not enough support, even though several of the opposition groups did back it, so it's gone back to the table for discussion, and we will be discussing that in more depth a bit later on. 5 British Muslims were arrested this week in relation to the protest that was made against the cartoons and figments in relation to the Prophet Muhammad ﷺ. A lot of Muslims protested in 2 different ways. Some were peaceful and some used certain slogans. Now, under some policy, which I'm not sure which one it is, that this was incitement to murder. I mean, I've heard of incitement to terrorism. This was incitement to murder. This was another issue. This was in the press this week. Also, we would like to, if possibly half the time, is to discuss the issue in Palestine, where once again the streets of Palestine has been full of riots, and this was due to British personnel pulling out of a jail that they had secured or they were looking after. The Israeli government felt these prisoners would escape, it'd be a danger to them, and they moved in. This caused riots on the streets of Palestine. नाज़रीन, मैं as usual थोड़ा उर्दू में भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, if आप सवाल करना चाहें उर्दू में या पंजाबी में, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, तो हम उसको ट्रांसलेट भी करके अपने पैनल से वो सवाल करेंगे. As usual, it's a bilingual program, both English and Urdu. And I would now like to take the opportunity to introduce my special guests that I have every week. And first of all, मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में बोलने के लिए कि एक मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ लाती हैं, उम्मी आदिल. शुक्रिया आपका आने का आज हमारे प्रोग्राम पे. And next to Ummi Adil is Mark Clayton. Welcome, Mark, to our program. Mark has been involved with Liberty on its executive, former councillor, and I believe former parliamentary spokesperson as well, and his main interest would be ID cards. But I'd like to start off today's program. मैं पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ जो इशू है बुरके का. तो मैं उम्मी आदिल से ये सवाल करूँगा कि ये इस वक्त इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है. तो why is this a big issue? Why is the burqa a big issue? ये क्यों इस वक्त इतना बड़ा significant point बन गया है ब्रिटेन में, यूरोप में और दुनिया में कि ये बुर्का क्यों ये बैन करना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है. तो इसकी बहुत सारे इसके पहलू हैं. जो बात आपने की या बुर्के की या पर्दे की, कोई एक बात नहीं है कि जो 1-2 सवालों में हम उसका नतीजा निकाल सकें. दरअसल हम जो लोग यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो बेशक हमारे पास नेशनैलिटीज़ भी क्यों ना हो, मगर इसके बावजूद हमें पहले तो ये यकीन करना चाहिए और अपने दिल को समझाना चाहिए कि हम माइनॉरिटीज़ में हैं. ये इनका मुल्क है, ये इनकी सोसाइटीज़ है, इनका अपना वे ऑफ लिविंग है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है. लेकिन हम भी इस मुल्क में रहते हैं. मैं इधर पैदा हूँ, ये मेरा मुल्क है. इधर आजकल जो 2nd और 3rd जनरेशन है, मेजॉरिटी 70% जो इस वक्त इस मुल्क में पैदा हुए हैं वो ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं. तो वो भी इस मुल्क को अपना समझते हैं. बिल्कुल समझते हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. लेकिन बात ये है कि बेशक के वो यहाँ पर रहते हैं हम लोग और उनका अपना मुल्क है, लेकिन हमें इनके मुल्क की ज़ुबान में बात करनी चाहिए.
इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात करनी चाहिए, बल्कि अपने मज़हब को बीच में लाकर इन पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लामी मुल्क तो नहीं है ये जी, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने अपने तरीके से अपने कवानीन बनाए हुए हैं, और जो इनके कवानीन हैं ज़ाहिर है वो हमें सूट करते हैं तो हम यहाँ पे रह रहे हैं ना। अब जैसे ह्यूमन राइट्स, इसके ये अलंबरदार अपने आप को ये कहते हैं, और उसके बाद फिर ये है कि फ्रीडम ऑफ वुमेन, इसके ऊपर ये बोलते हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं। अब जो डच हैं, डच ये बोल रहे हैं कि ये बुर्का ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जस्ट लाइक टू से दैट व्हाट द डच आर सेइंग दैट बाय हैविंग अ वेल और अ बुर्का this is also against human rights. What they're saying is that are you not oppressing the women in wearing the burqa? आप बोल रही हैं कि ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स में दूसरी जो बात है ये ख़वातीन की आज़ादी निस्वा में दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अब जब ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं औरतों की आज़ादी में, तो ज़ाहिर है कि वो औरत मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो औरत है। और अगर एक औरत को इजाज़त है जितना अपना लिबास यानी कि कम से कम पहनने की, इसी तरह उसको इजाज़त होनी चाहिए कि जितना मर्ज़ी वो ज़्यादा से ज़्यादा लिबास पहने, क्योंकि ये तो एक इनफरादी उसकी इंडिविजुअल आज़ादी है और ये ह्यूमन राइट्स है। तो ये और दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि अगर वो कहते हैं कि एक औरत बगैर पर्दे के तो जितनी मर्ज़ी फिर ले। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क से करना चाहता हूँ। Mark, what I'm going to try to translate here. What Umi Adil is saying is that in the Netherlands that they want to try to ban the burqa or the veil, and what she's saying is on the argument of human rights, the person and the people, the individuals should have the right of choice, like here in the West where they have the right to wear whatever type of clothing that they wish. They can wear as little as they desire. And then why should they not be allowed to cover themselves as much as they desire? What's your view on that? Well, clearly what you dress is part of freedom of self-expression, which everyone's entitled to. Now there are one or two places you go where you're not allowed to wear a motorcycle helmet when you go into your bank, and children often have to wear school uniform. I know I had to cut my hair when I was a school kid, but for adults in normal circumstances, how they choose to dress is a matter of their own business and nothing to do with the state. I mean, the gentleman who moved the motion in the Dutch Parliament actually equated the veil to terrorism. I mean, and yet there's only about 50 women in the Dutch community that actually wear veils. I mean, I can't seem to find the relevance on that. Well, it doesn't really matter if there's 1 or 1 million. There's no connection particularly between style of dress, particularly burqa or habib, which I think the lady's wearing tonight, and crime. Clearly, if people go around dressed to provoke violence, such as Hell's Angels or something like that, then it's a different case. But this is a non-violent self-expression, and if people choose to wear that sort of clothing, then that's up to them. So you're saying that it should be left to the choice of an individual. What do you think of legislating? I mean, do you feel that moving towards legislation and then probably something that you may not approve of? Or well, I don't see any prospect of that in the United Kingdom, and as I say, in any event, it's covered under the Human Rights Act and the European Declaration of Human Rights as being an element of self-expression. I'm sorry, and it's a freedom of women as well. Can I just I have a caller, Mr. M. Khan. Mr. Khan साहब, आप खुद कुछ जी आपने फ़ोन किया, आप सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो हमारे एमपी या जो भी हैं आपके सामने, इनसे ये सवाल मेरा इनसे उर्दू में है, लेकिन आप इसमें अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दें। कोशिश करें। मसलन 1914 में जब हिटलर ने बरतानिया के साथ जंग की, तो उस वक्त जो ब्रिटिश आदमी थे जी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे कि हिटलर के ऊपर या जर्मनी के साथ जंग ना लड़ी जाए, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेररिज्म जो एक्ट के मुतहद उन लोगों को यहाँ ब्रिटिश से निकाल कर समुद्र में डाल दिया, या उन्हें कत्ल किया, या सिर्फ जेलों में डाला? और दूसरा जो फलस्तीन का आपने बोला है, हाँ जी,
फलस्तीन का जो मामला है, ये जितनी रुए ज़मीन के अंदर मुसलमान हुकूमतें हैं, ये इसराइल को फंडिंग करती हैं। वो बिलखसूस जो अरब मुमालिक हैं, ये इसराइल को फंडिंग करती हैं और ये बोतान लगाते हैं कि अमेरिका इसराइल को फंडिंग, अमेरिका का तो हक बनता है, जिसका बेटा हो वो उसको हक बनता है, लेकिन स्पेशली जो मुस्लिम गवर्नमेंट है। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। मैं ये सवाल उम्मी आदिल से पेश करता हूँ। अमी थोड़ा डाइग्रेस हो गया कि इन्होंने जो बात की है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की, और फिर इज़राइल और अमेरिका का और फिलिस्तीन का, मे भी आप इस पर कुछ बात करना चाहें या नहीं? बात यह है कि इस वक्त जो हालात से, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमने उनको फेस करना है, बजाय इसके कि हम पीछे से हिस्ट्री लेकर आएँ और फिर आगे उसको बढ़ाएं और उसी तरीके से मतलब चला जाए। तो इससे बेहतर ये है कि उस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, हम उनके मुताबिक चलें। जो आज की पॉलिसी, जो इश्यूज़ हैं इस वक्त, जिसको हम फेस कर रहे हैं, जिसको आने वाले वक्त में हमारे बच्चे फेस करेंगे, कि मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जबकि ह्यूमन राइट्स के ये लंबरदार हैं, ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की हैं और फ्रीडम है औरतों की पूरी पूरी, तो फिर हम इनकी ज़ुबान में इनसे बात करें कि ये तो आज़ादी के ऊपर एक चोट है, या तो फिर उससे ये दस्तबरदार हो जाएं, अपने आप को कह दें कि नहीं, हमारे पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे आज़ादी, जिसको चाहेंगे उसको नहीं देंगे। तो बात जो इस वक्त हो रही है वो तो इस वक्त के मौजूदा हालात पर हो रही है। मेरा ख्याल कि हम इस टॉपिक को उसमें ना उलझें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपने फिर भी इस पे थोड़ा इलेबोरेशन कर दी है कि जो व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ दैट वी शुड बी कंसर्न्ड विद द इश्यूज टुडे. We welcome the question that was asked, but we need to move forward and we need to work within the legal system, within the political environment that we live today, and move forward according to Ummi Adil. But if I can go back to Ummi Adil, is कि इस्लाम क्या बोलता है इसका? ये जो अब बुर्का, कुछ स्कार्फ पहनते हैं, कुछ बुर्का पहनते हैं, कुछ पूरा नकाब पहनते हैं, आई मीन इस्लाम में इसमें क्या डायरेक्शन है? एक्चुअली शुरू में मैंने अपनी गुफ्तगू में यही कहा था कि इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर के हमें मतलब कि बात करनी चाहिए। अब ये जो आपने सवाल किया है कि इस्लाम क्या कहता है बुर्के के मुतालिक, तो सही बात ये है कि बुर्का बज़ाते ख़ुद अपनी इस हैसियत में आसमान से नहीं उतरा है और ना ही इसकी कोई शक्ल है शरीयत में, बल्कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में ख़वातीन चादरें लेती थी, और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जिस तरह औरत पर्दा करती है अपने मुल्क के हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ लोग चादरें ले लेते हैं, कुछ लोग 2 पीस में बुर्का बनाकर अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन इस्लाम में असल जो मकसद ये है वो ये बुर्के को एक कपड़े को शेप देकर पहनना नहीं है। सूरह अल-नूर और सूरह अल-अहज़ाब के हवाले से ये है कि औरत के लिए हुक्म ये आया था कि औरत को अपनी ज़ीनत, ज़ेबाइश, आराइश, हुस्न, खूबसूरती को अपने लिबास के ज़रिए भी दूसरों तक मतलब कि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसको ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिसमें कि वो बाइज़्ज़त नज़र आए, जिस्म भी ढका हुआ हो और उसके खद्दो-खाल भी नज़र ना आए। असल जो रूह है पर्दे की वो ये है। अब मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने अपने कल्चर के हिसाब से बुर्का कहीं पहना जाता है, कहीं चादर ली जाती है, कहीं और तरीके के मतलब अपना अपना ये रिवाज है एक। लेकिन अगर हम मतलब कि रिजिड होकर एक बुर्का करें तो बुर्के की बज़ाते ख़ुद शरीयत में कोई नाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं, कोई इसका डिज़ाइन नहीं उतरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबियात मुबारका जो थी उम्महातुल मोमिनीन ने कोई ऐसी शक्ल हमें बुर्के की नहीं दी है, ठीक है, पर्दे की दी है। हाँ जी, I'd like to move over to Mark on the next issue. We've discussed the burqa in some depth there, and maybe somebody may want to call in on that. Mark, the issues of ID cards, from a point of view from the government, who originally said that this would not be compulsory. I mean, why do you think they've digressed from their original position on this?
Oh, I don't think the government ever had any intention of having anything but compulsory ID cards, and if they can't have it in the bill, then they'll make it so you have to have an ID card if you want to get a passport, and probably if you want to get a driving licence, either for the first time or to renew it. So it's quite clear that for all but a minority of people, you either have to have one, or you won't be able to drive, you won't be able to go on holiday, you won't be able to claim benefits. Yeah. I mean, what's actually wrong with an ID card? At the end of the day, there are countries in the world that have ID cards. They're used in Middle Eastern countries, Far Eastern countries. I think, do not the US have some sort of card facilities? Is it green? No, they have a green card, don't they? Well, that's just for your employment status, Right. but there's no, But there is, no again, photo and there's no you requirement can't work to carry without it, put it that way. No, but you don't have to have one to travel in the United So what's States. wrong with having an ID card in Britain? Well, there's a whole host of things wrong with it. It's a fantastically expensive solution looking for a problem. It'll only have a minimal effect on the objective it's trying to achieve. It'll be another government IT disaster. There's a huge huge impact on individual civil liberties. You'll have to provide all this information, fingerprints, probably DNA. But the government says that because of the terrorist threat in Britain and in other countries, and because of what happened 7/7, they feel that ID cards could be utilised to prevent people who would come into this country, or people that have a criminal activity, they'd be easily identified. How can we, the government is saying is that, so this is for the protection of this country. Just before you answer that question, I actually have another caller online. Yes, would you like to ask your question, please? Yeah, what it is about ID cards. I think ID cards are totally wrong. They won't prevent terrorism or in any form or way. It just allows the state to control the individual, see what he's doing, what he's not doing. ID cards won't stop murderers or rapists or petty criminals from committing their crimes. It won't even help the police trace them. The best thing a criminal can want is an ID card that you can copy. The fastest growing crime rate in this country is identity fraud, and ID cards will just help that. Terrorism, it won't prevent terrorism. Actually, you will find that IDs help terrorists move undetected, and even allows terrorist organisations to organise and pick certain people for their jobs. We found Hamas and all that trying to find British passport holders and European people, so it actually helps terrorists target the right person. So I think it's just an expensive thing, trying to reassure the people on ID cards. I went to Glasgow Airport and I was going through the... Yeah, I'll have to stop you there, because you've actually made the point that you feel that it's not going to be effective. If I can put that to my panel. Thank you very much for your call, by the way. Mark, I mean, obviously, this gentleman feels that the ID cards would actually possibly be beneficial to those who may want to commit crime. I mean, I find that a bit difficult to understand, really. If you have ID cards, and if they've got biodata on them, and if they're going to use the eye scan, then it's unique to that individual, isn't it? Well, the ID cards would not have prevented any of the major incidents in New York, Madrid or London, all of which were committed by people who were identified and travelling using legitimate documents, whether they were nationals of the country concerned or in the case of the New York attacks, foreigners. So it would have very minimal impact on that, and indeed the fact that they had an ID card would probably mean that they would pass through without further checks. So it's one of these areas in which they won't be effective. They won't be effective particularly against benefit fraud or yeah, but if I just go back to immigration. the terrorists that you mentioned regarding 9/11, some of them actually, well, if I believe, yes, they trained in the US, they got their pilot's licenses in the US, so they were active in the US. Now, if there was an ID facility there, then do you not think that it would be easier to track them down, or to have surveillance on them or on their movement? Well, they boarded the planes concerned using legitimate identity documents, and they weren't, obviously, as they were not expecting to come back, they weren't particularly fussed that anyone knew who they were. Clearly, if criminals wish to escape and have to be identified in order to commit the crime, I suppose maybe some minor deterrent, but the £3 billion or so that it's going to cost at least, and £100 for each
over £100 for each card now, would be much better spent on more policing, which would have a far greater effect in reducing crime and terrorism. Yeah, I have another caller online. Yes, would you like to ask your question, please? Hello? आप सवाल करना चाहते हैं? Hello. Yeah, hello there. Hi. Would you like to ask your question, please? Yes, I would. I'd like to just say it'd be a lot better if we just send all the foreigners home. Do you think so? I do, yes, because we won't have no trouble then, will we? Send all the foreigners you look home. at the cartoons the other week. How many English people did you see at the cartoons protest? Well, the people that were there were British Muslims, weren't they? So they are British. I mean, if they're born in England, they're English as well. How do you define somebody as a foreigner? Mark, I mean, the gentleman said that send all the foreigners home. How does that help the situation in Britain when you have British Muslims, where you have people who are born and brought up here two, three generations? I mean, do you think that's a valid argument? We live in a modern world where it's a multicultural society and where people travel freely between countries for work, holidays, education and culture, and I don't think that stepping back hundreds of years to the sort of situation they had in Japan before opened the doors to the rest of the world would be very beneficial to this country or indeed anywhere else in the world, and it would be letting the terrorists win. Yeah. I've got another caller online. Yes, could you ask your question? जी आप सवाल करना चाहते हैं? जी मैं सिर्फ कमेंट करना चाहती हूँ अभी जो उम्मे आदिल जो गुफ्तगू कर रही थी उसके बारे में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये फील होता है कि ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि इस सेंचुरी में, इस डे एंड एज में आज हम इतने बेसिक हकूक की बात कर रहे हैं कि जो एक औरत का एक बुनियादी हक है, एक जैसे एक पर्दे का हक है फॉर एग्जांपल, तो उसको उसके लिए भी लड़ना पड़ा। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अफसोस का मुकाम है और समझ में नहीं आता कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं अब इस वक्त दुनिया में क्यों हो रही हैं। अब जहाँ भी देखें, ख़ासतौर पे यूरोप में ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं कि जिन्हें देखकर इंसान यही फील करता है कि हमारा तो ख्याल था कि इस 21st सेंचुरी में एक तरक्की का दौर होना चाहिए। Thank you very much for your question. Thank you very much for your question. इसका आप जवाब देना चाहते हैं? एक्चुअली उन्होंने जो मतलब कि बात की है कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह से जो कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी हद तक हमारा अपना भी कसूर है। वो ये कि चूँकि हम ख़ुद अपने रिलीजन की उस लिहाज से नहीं कदर कर रहे। I'll have to stop you there, I'm sorry. Okay, we've come to the end of the program. I think 30 minutes have gone very, very quickly. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ for all those people who've called in. नाज़रीन का शुक्रिया करना चाहता हूँ. Inshallah, I hope to see you next week. Let me thank my guests, Ummi Adil, Mark Clayton, and I'd like to thank my viewers. And hopefully I'll see you next week at 10:30, same time, same place. All the best and Assalamu alaikum.